हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सोशल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और हमारे फ्यूचर से जुड़े बड़े बड़े सवाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबने अपनी टेक्स्ट बुक में चिंटू और पिंकी के बीच की ये बातचीत जरूर देखी होगी। ये परफेक्टली बताती है कि पानी कितना कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ हम सुनते हैं कि फ्लड यानी बाढ़ से कितनी तबाही हो गई, और दूसरी तरफ ये भी सच है कि पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पिंकी की बात बिल्कुल पॉइंट पर है। एक ही चीज, पानी कैसे लाइफ दे भी सकती है और ले भी सकती है। इसी सवाल को हम आज एक्सप्लोर करेंगे। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट, कि हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा यानी 3/4 पार्ट पानी से कवर्ड है। हम इसे ब्लू प्लैनेट भी तो कहते हैं। स्पेस से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे पानी की कोई कमी हो ही नहीं सकती। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर हम एक वाटर वर्ल्ड पर रह रहे हैं जहां इतना सारा पानी है, तो फिर हम हमेशा वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी की बात क्यों सुनते रहते हैं? कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस क्यों है? ये अजीब लगता है ना। इसी पजल को सॉल्व करना इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट है। और देखिए, ये कोई दूर की या छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। प्रिडिक्शंस के मुताबिक 2025 तक लगभग 2 बिलियन लोग ऐसी जगहों पर होंगे जहां पानी की एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी होगी। सोचो, ये दुनिया की पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस प्रॉब्लम की असली वजह आखिर है क्या। तो चलिए अब इस स्कैर्सिटी के पीछे के असली कारणों को समझते हैं, और हो सकता है इसकी वजह वो ना हो जो आप सोचते हैं। देखो, जब भी हम पानी की कमी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर सूखा या कम बारिश की तस्वीर आती है। पर वो सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली विलन्स तो ये 3 हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब पानी को इतनी तेजी से यूज करना कि वो दोबारा रिप्लेनिश ही ना हो पाए। एक्सेसिव यूज, यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। और अनइक्वल एक्सेस, जहां कुछ लोगों को बहुत पानी मिलता है और कुछ को बिल्कुल नहीं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो। ये स्कैर्सिटी के 2 अलग अलग चेहरों को बिल्कुल साफ दिखाती है। लेफ्ट में आप देख रहे हैं लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव स्कैर्सिटी, यानी जब पानी की क्वांटिटी ही कम हो, पानी है ही नहीं। लेकिन राइट साइड में देखो, बाढ़ आई हुई है, पानी हर जगह है, लेकिन वो इतना गंदा है, कंटैमिनेटेड है कि उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। ये है क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी। यहाँ पानी तो है, पर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि वो बेकार। तो ये क्वांटिटेटिव स्कार्सिटी यानी पानी की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? इसके पीछे सिंपल रीजंस हैं। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पानी चाहिए। उन्हें खिलाने के लिए ज़्यादा अनाज उगाना पड़ता है, जिसके लिए इरिगेशन या सिंचाई में बेहिसाब पानी लगता है। फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत पानी चाहिए। और शहरों में आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने खुद के ग्राउंड वाटर पंप्स लगा लेती हैं, जिससे ज़मीन के नीचे का पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। और क्वालिटेटिव स्कैर्सिटी का क्या मतलब? पानी की क्वालिटी इतनी खराब क्यों हो रही है? इसका सीधा सा जवाब है पोल्यूशन। जब हमारे घरों और फैक्ट्री से निकला गंदा पानी, खेती में यूज होने वाले केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों और झीलों में छोड़ दिए जाते हैं, तो वो उस पानी को जहरीला बना लेते हैं, जो इंसानों के लिए खतरनाक है। तो इतनी बड़ी वाटर प्रॉब्लम से डील करने के लिए इंडिया ने क्या किया? आज़ादी के बाद देश ने एक बहुत बड़े और एम्बिशियस सोल्यूशन की तरफ रुख किया, बड़े बड़े डैम्स बनाना। पर क्या आपको पता है, पानी को मैनेज करने का ये आइडिया इंडिया में कोई नया नहीं है। हमारे यहाँ तो इसकी सदियों पुरानी एक बहुत रिच हिस्ट्री रही है। 1st सेंचुरी BC में इलाहाबाद के पास वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बने डैम्स और इरिगेशन सिस्टम्स तक, 11th सेंचुरी की विशाल भोपाल लेक हो या 14th सेंचुरी में दिल्ली का हौजे खास टैंक, हम इस काम में हमेशा से माहिर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया ने इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, जिन्हें कहा गया मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, इन डैम्स को सिर्फ एक काम यानी इरिगेशन के लिए नहीं बनाया गया था। इनके बहुत सारे मकसद थे। बिजली पैदा करना, बाढ़ को रोकना, शहरों को पानी सप्लाई करना, घूमने फिरने के लिए जगह बनाना, और यहाँ तक कि फिशिंग को भी बढ़ावा देना। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तो बड़े गर्व से कहा था कि ये डैम्स आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यानी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उनका मानना था कि यही डैम्स देश को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएंगे। और ये स्लाइड उसी विजन को परफेक्टली दिखाती है। हीराकुद डैम के इस स्केल को देखिए। ये आज़ादी के बाद की उस बुलंद सोच और नेहरू जी के डेवलपमेंट के सपने का एक जबरदस्त सिंबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए मंदिर सच में सारे वादे पूरे कर पाएं, या फिर इनकी वजह से कुछ ऐसी नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई जिनके बारे में सोचा नहीं गया था? यहां से कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये हमें इसके दोनों पहलू दिखाती है। प्रॉमिस था किसानों के लिए सिंचाई का पानी, शहरों के लिए बिजली और बाढ़ से सुरक्षा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हुई? डैम्स ने नदियों का नेचुरल फ्लो रोक दिया, उनके नीचे मिट्टी जमा होने से कई बार फ्लड्स उल्टा और बढ़ गए, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान हुआ, कीमती जंगल और जमीन पानी में डूब गए, और सबसे दुखद, लाखों लोगों को अपने घर और गांव छोड़कर जाना पड़ा। ये दामोदर घाटी का एक लोकल लोकगीत है। इसमें लोग दामोदर नदी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बाढ़ को थोड़ा कम कर दें। आयरनी देखिए, जिन डैम्स को फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था, उन्हीं की वजह से आई बाढ़ से लोग परेशान थे। ये इन बड़े प्रोजेक्ट्स की असली इंसानी कीमत को दिखाता है। और ये प्रॉब्लम्स सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं हैं, ये पॉलिटिकल भी बन जाती हैं। जब एक नदी कई स्टेट से होकर गुजरती है तो उस पर डैम बनाने से पानी के बंटवारे को लेकर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच तनाव बना रहता है। तो इन बड़े डैम से जुड़ी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? अब इंडिया की वाटर पॉलिसी किस दिशा में जा रही है? चलिए देखते हैं हमारे फाइनल सेक्शन में। अब हम देख रहे हैं कि सरकारी पॉलिसीज में एक क्लियर शिफ्ट आ रहा है। जल जीवन मिशन का मकसद है हर गांव के घर तक साफ पीने का पानी नल से पहुंचाना। अटल भूजल योजना लोगों की सोच बदलने पर फोकस कर रही है, पानी खर्च करने से ज्यादा उसे बचाने पर। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मो क्रॉप जैसे नारों से पानी के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सरदार सरोवर जैसे विशाल डैम्स अभी भी बनाए जा रहे हैं, जिनका मकसद गुजरात और राजस्थान जैसे सूखे से परेशान इलाकों तक जरूरी पानी पहुंचाना है। तो आखिर में हम इसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है डेवलपमेंट की ज़रूरत, जिसके लिए बहुत सारा पानी और बिजली चाहिए, और दूसरी तरफ है हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की आवश्यकता। तो आने वाले समय में इंडिया के पानी के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके बारे में आप भी ज़रूर सोचना। All right, everyone, welcome. Today we're going to dive into a really fascinating story about water. It's a story that's thousands of years old, but you'll see it's more important for us today than ever before. So are you ready to explore some of India's ancient water wisdom? Let's get started. Okay, let's kick things off with a bit of a puzzle. Now, you've all heard of Cherrapunji, right? It's famous for being one of the absolute wettest places on the entire planet. So here's the question. How on earth is it possible that a city just a short drive away has a massive water shortage? Any ideas? It doesn't quite add up, does it? Well, here is the unbelievable answer. The city of Shillong, which is only 55 kilometers away from all that rain, faces a serious, acute shortage of water. It's so bad, in fact, that the city depends on rooftop water harvesting for up to a quarter of its entire water supply. It's a huge paradox, isn't it? All that rain next door, and yet not enough water to go around. Now, we've all studied the big solutions, the huge dams and these massive multi-purpose projects. But the thing is, they come with their own set of problems and disadvantages. And that's why we're now being forced to look for other, smarter, and more sustainable ways to conserve our water. So, here's our game plan. We'll start by seeing why dams aren't the only answer. Then we're going to dig into India's incredible ancient water wisdom. We'll take a quick tour of some amazing harvesting tech, check out something I call the bamboo superhighway. It's awesome. And then see how these old ways can solve modern problems. And to finish, well, we'll turn the question over to you. So here's the most important thing to get. The amazing solution we're looking for, it isn't some brand new high-tech invention. No, it's actually about rediscovering the brilliant techniques our ancestors figured out centuries ago. It's all about our ancient wisdom. So what exactly is rainwater harvesting? Well, to put it simply, it's any system that helps us collect and store water, whether that's rainwater, groundwater, river water, or even floodwater. But the key is that it's all based on the local environment and what the community actually needs. It's not a one-size-fits-all solution. And let me tell you, our ancestors were absolute masters of this. They had this deep, incredible understanding of rainfall, of different soil types. Just look at the variety here. In the Western Himalayas, they built gulls or kols. Over in Bengal, they created inundation channels to manage floods. In Jaisalmer, they had katheens, and in other parts of Rajasthan, johads. So many unique solutions. All right, buckle up. Let's go on a quick tour across India and see some of these amazing techniques in action.
Okay, have a look at this map. We're going to journey to different corners of the country to see exactly how people became experts at water conservation, all based on their own unique local conditions. Our first stop is Rajasthan, in the dry, arid parts of the state. And here we find this absolutely brilliant system called a tanka. So, what is it? It's basically a huge underground tank, sometimes as big as a large room, that's built right inside a house or a courtyard to store the rainwater that falls on the roof. This system is so clever because it's so simple. Just look at this illustration. The rain falls on the sloping roofs, it flows down a pipe, and it gets stored directly in these underground tankas. It's just a fantastic piece of design, isn't it? And this water is really special. The locals even have a name for it. Pilar Pani. It's considered the absolute purest form of natural water you can get. What's interesting is they let the first spell of rain wash away, to clean the roof and the pipes. After that, every single drop is carefully saved. And don't for a second think these tankas are just small pits. Get this, in one house in Falodi, the tanka was 6.1 meters deep. To put that in perspective for you, that is deeper than a fully grown adult giraffe is tall. Can you even imagine that? An underground water tank taller than a giraffe. Okay, from the deserts of Rajasthan, we're now jumping all the way to the northeast to Meghalaya. And here, we find a 200-year-old system that is just mind-blowingly clever. I like to call it the bamboo superhighway. Just look at these pictures. This is a 200-year-old system where they use bamboo pipes to tap into streams and springs way up on the hillsides. And then, and this is the best part, they use nothing but gravity to transport that water over hundreds of meters. No pumps, no electricity, just clever engineering. So, how does it all work? It's really a four-step process. First, water from a stream enters the bamboo pipe system. Second, it travels, sometimes for hundreds of meters. Third, and this is genius, they control the flow just by changing the positions of the pipes. And finally, the water is delivered, literally drop by drop, right where it's needed at the base of the plants. The precision of this system is just incredible. I mean, look at this. You have about 18 to 20 liters of water entering the system way up at the source, but by the time it gets to the plant, it's been slowed down to just 20 to 80 drops per minute. Talk about efficiency. Not a single drop of precious water is wasted. So we've seen these amazing systems from the past, but you might be wondering, are they still useful today in modern India? The answer is a huge yes. Let's see how. Well, today, it's a bit of a mixed bag. It's like a tale of two different places. In western Rajasthan, sadly, rooftop harvesting is becoming less common because people now get water all year from the Indira-Gandhi Canal. But then you look at Tamil Nadu, and it's the first state in India to make rooftop rainwater harvesting compulsory for every single house. They even have laws to punish people who don't do it. And where it is being used, the success stories are just inspiring. Take a look at this village, Gendathur in Karnataka. They have embraced rainwater harvesting so completely that the village is said to have earned the rare distinction of being rich in rainwater. What a powerful statement that is. And the numbers really do speak for themselves. In Gendathur, nearly 200 households have installed rainwater harvesting systems. And from that, each house is able to collect around 50,000 liters of water every single year. That's a huge amount of water. So at the end of the day, it doesn't matter if we're talking about the traditional cools high up in the mountains or modern rooftop systems in our big cities. The basic principle, the core idea is exactly the same. Every single drop of water is precious. Every drop counts. And that's our look at India's amazing water wisdom. But you know what? The story doesn't really end here, because now it's over to you. So I want to leave you with a question to think about. What kind of rainwater harvesting systems are being used in your own locality? In your city or your village? I want you to look around, be curious, and find out. And think about how we can use this incredible ancient wisdom to build a better future. Really think about it.